When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर और आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट अलाउज कास्ट सेंसस सेज हाउ एल्स विल बिहार फिक्स कोटा। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 5 एंड ये रिलेटेड पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस एंड व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कंडक्टिंग कास्ट बेस्ड सेंसस। तो दोस्तों अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू entertain various pleas challenging the state government's notification to conduct caste-based census in Bihar and friends। बाकी ये दोनों ही पॉइंट्स दोस्तों हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर्ड है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक। Our next important headline is Pride and Prejudice. It is available on page number 12 and ये related paper to judiciary section से। In this article we have to know does person's sexual orientation make him ineligible for the appointment as a judge of constitutional court and can government and judiciary differ on moral questions and what lies ahead। तो दोस्तों ये सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से कवर्ड है, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज रिट्रेटेड इट्स रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटिंग सीनियर Advocate Saurabh Kirpal as a Delhi High Court judge, and Supreme Court disagreed with the center over the fact that his openness about his sexual orientation will lead to bias and prejudice, right? Our next important headline is Wait for Justice 3 years on. It is available on page number 13 and ये related paper to polity and governance से। In this article we have to know provisions of Citizenship Amendment Act 2019, repercussions of protest, challenges and concerns and government stand and what happens next। इसको भी हमारी वेबसाइट पे लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड लिंक भी अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक। Our next important headline is Celebrities, influencers must disclose material interest in endorsements. It is available on page number 15 and ये related paper to polity and governance से। In this article we have to know about the key highlights of government's endorsement guidelines for celebrities and social media influencers and rationale behind the move। तो दोस्तों recently government made it mandatory for social media influencers and celebrities to disclose their material connection or interests such as share in company, employment of self or family, free trips, hotel accommodation, discounts and awards while endorsing any product, service or brand, right? बाकी other points के लिए you can go through this article। Our next important headline is What constitutes a trademark violation? Subway versus Suburb in High Court। It is available on page number 18 and ये related paper 3 intellectual property rights से। In this article we have to know what is trademark, violation of trademark and what was the case before the court। तो दोस्तों trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises and trademarks are protected by intellectual property rights, right? बाकी अदर पॉइंट्स की you can go through this article। Our next important headline is Women in Command Roles। It is available on page number 18 and ये related paper 1 Women Empowerment से। In this article we have to know about women's participation in the armed forces, recent developments and what is the significance of recent move for women officers and army। तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे कल ही बहुत अच्छे से कवर किया गया है एंड लिंक भी अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड is going to promote at least 108 women officers from the rank of lieutenant colonel to colonel, right? Our next and last important headline is Hakku Patra। It is available on page number 18 and ये related paper to governance section से। In this article we have to know about Hakku Patra। तो दोस्तों recently Prime Minister of India distributed Hakku Patra to the families of Banjara community। बाकी अगर हम Hakku Patra की बात करें दोस्तों तो it is a title deed which is a document that establishes the bearer as the owner of the land or property and it enables them to apply for bank loan as well as buy or sell land, right? बाकी other points के लिए you can go through this article। तो friends आज के लिए इतना ही। Thanks for listening। For regular updates you can follow us on various social media platforms।